Hello and welcome to all. Welcome to DSS online class. Today I am start 4th chapter operating system. Today we will start basics of operating system. Part 1. In part 1 we are going to learn number 1 introduction of operating system. Number 2, we will see what is operating system. Then we will see example of operating system with market share. Then we will see history of operating system, features and role of operating system. Then we will learn concept of kernel, what is a kernel, okay. Then next is type of kernel. Now let's begin with introduction of operating system. Operating system is short form is OS, is one of the core software programs that runs on the hardware and makes it usable for the user to interact with the hardware so that they can send command, that is input, and receive result, that is output. It provides a consistent environment for other software to execute commands. It means it's provide a environment to the any application in any program on the computer system, so that operating system is that center through which system hardware, other software and the user communicate. We can see this figure. This figure shows working of the operating system and how it utilize different hardware and resources. We can see this is all the computer system that consists of operating system like CPU, disk, mouse, printer, etc, etc. And over this hardware, that is the computer system, and software is main software is operating system, that is the system software. You know very well system software, then application software, okay. So this is the system software, and over this one is the system software, and अपसाइड ऊपर देखो दैट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके. इसको आप देख सकते हो कंप्यूटर, गेम्स, स्पेयर सीट, वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस, इंटरनेट ब्राउजर. सो दैट इज़ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके. लेट्स सी what is the operating system, how to define the operating system. So an operating system, OS, is a software which acts as an interface between the end user and the computer hardware. We can see the picture. There is the hardware, CPU, memory, hard drive, and operating system. Next one is operating system, Windows, Apple OS X, Linux, okay. And next one is this is the end user. Operating system is a mediator, hardware देन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर देन सॉफ्टवेयर के बीच का जो होता है वो कहलाता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके. मीडिएटर, ओके. इट इज़ ए इंटरफेस, ओके, और इट इज़ ए मीडिएटर बिटवीन हार्डवेयर एंड इन यूज़र, ओके. नाउ एवरी कंप्यूटर मस्ट हैव एट लीस्ट वन OS टू रन अदर प्रोग्राम, ओके. मतलब हर कंप्यूटर आपका एटलीस्ट एक OS जो प्रोग्राम को रन कराने के लिए होता है, ओके. एंड एन एप्लीकेशन लाइक क्रोम, MS वर्ड, गेम एक्सेट्रा नीड्स सम इन्वॉल्वमेंट इन विच इट विल रन एंड परफॉर्म इट्स टास्क. द ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प यू टू कम्युनिकेट with the computer without knowing how to speak the computer's language, okay. Because computer understand the binary language, okay, and all users don't know what is the binary language, okay. So the operating system provides some medium
through which without the knowledge directly communicate the computer. ओके, कोई भी नॉलेज ना हो, इसीलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। वो उनके बीच का क्या होता है, मीडिएटर होता है, जो आपकी बात को कंप्यूटर को समझा सके और जो कंप्यूटर कह रहा है उस बात को यूज़र को समझा सके। ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओके, it is not possible for the user to use any computer or mobile device without having an operating system. It means ये पॉसिबल नहीं है कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप कोई भी मोबाइल यूज़ कर सको या कोई भी कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर सको। ओके, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ही होगा। ओके बेटा, सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ operating system. Okay, now let's see some example of operating system with market share. Okay, market share means how do you widely used all over the world. Here is the list of the operating system with the latest market share. The example of operating systems are Windows, Android, iOS, Mac OS, Linux, Chrome OS, Windows Phone OS. Okay, and can you understand the market share? This is the market share. We can see Android, Windows operating system widely used all over the world. So all over the world, Windows share 40% of the market, where the Android 38% the market. The market share is Android is 38%. Then is iOS, that is the Apple operating system. Then Mac operating system, that is the iOS only. And then after other includes the 2%, that is the Chrome operating system and Windows Phone operating system, including the Linux. Now next is history of OS. कुछ देखते हैं, आगे देखते हैं कि सम हिस्ट्री, कुछ हिस्ट्री है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर फर्स्ट डेवलप इन द लेट 1950s to manage tap storage. The General Motors Research Lab imported the first OS in the early 1950s for their IBM 701. Here IBM 701 is the model of the computer. Okay बेटा, ये मॉडल होता है IBM कंप्यूटर का 701. Okay, this computer the first operating system was implemented. Okay, in the mid 1960s operating system started to use desks, and before that, then in the late 1960s the first version of the Unix operating system was developed. Okay, उसके बाद से 1960 में जो फर्स्ट वर्जन आपका यूनिक्स का आया ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ. ओके, द फर्स्ट OS ऑपरेटिंग सिस्टम built by Microsoft was DOS. It was built in 1981 by purchasing the 86 DOS software from a Settle company. Okay, the present day popular operating system Windows first came to extents in 1985 when GUI means ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो आप यूज़ करते हो उस समय. GUI का मीन्स क्या होता है कि जहाँ फोल्डर बना होता है, सब आइकन्स आपके सामने दिखते हैं, डेट इज़ कॉल्ड GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. was created paired with MS-DOS. Okay, that is Microsoft DOS. Okay, we can see here timeline here. Okay, in 1985 Windows first version is developed. Okay, then after that 1992 Windows version 3.1 is developed. In 1995 Windows 95
was developed. Now then Windows XP 2001. In 2001 is Windows XP is developed. Then 2006 Windows Vista is developed. Then 2009 Windows 7 is developed. Then 2012 Windows 8 is developed. Then 2015 is Windows 10 is developed. ओके बेटा, ये सब है 95 में का आपकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। 1985 में कब विंडोज़ का फर्स्ट वर्जन डेवलप हुआ था, 1992 में हुआ था, फिर 1995 में आया, फिर 2001 में XP आया आपका, उसके बाद से ये सब आते गए। ओके नाउ मतलब इस समय आप लोग करेंटली में क्या यूज़ कर रहे हैं? तो विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हो, आप सारे लोग यूज़ कर रहे हो विंडोज़ 10। ओके तो करंट में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? विंडोज़ 10 को ही यूज़ कर रहे हैं। एंड टुडे विंडोज़ 10 इज़ वाइडली पॉपुलर। ओके